Right, well, let's go across now to Pakistan. We're being joined on the phone line by Aisha Siddiqa, senior political commentator. Aisha, thanks so much for joining us on the phone line. Your reactions to what's happened? We've got a lot of commentary on whether Pakistan's establishment, military, was in the loop on this operation or not. Well, this was an operation which was conducted close to where there is Pakistan's primary military academy. So there has to be some cooperation. The question is at what level and at what time. Of course, there has to be some form of cooperation. Whether this was, cooperation in intelligence as well. So there are a lot of questions on this one. Right, Aisha, you're saying there are, of course, a lot of questions over there that remain unanswered. We heard President Obama's speech where he alluded to cooperation with the Pakistani intelligence, but again, not really specifying that this operation had any involvement from Pakistan. We've seen a deterioration of ties between US and Pakistan over the course of time. Hillary Clinton pointing out, last year, about how senior people in Pakistan's establishment perhaps knew where the likes of OSAMA bin LADEN and Mullah Omar were. So where does this all really fit into the larger US-Pakistan jigsaw? Well, for one, I think that, relations will remain tense as it is, but with a willingness on both sides to work. So, when people refer to a broken marriage and all of that, I think that's a very silly kind of an analogy. In a more strategic sense, this is not about a permanent or a temporary relationship. This is where, a frontline, Pakistan has been a frontline state. It seems that a situation is likely to change. For instance, now I think a question that needs to be asked is that, now after the Americans have captured Osama bin Laden, will they have sustained interest in the war on terror or in Afghanistan? Right. Perhaps it gives them a cushion to withdraw. Right, Aisha, if you just stay with us on the phone line for just a second, we've got some images coming in on our screens right now of the mansion that the American forces struck in Abbottabad on the screen right now, coming in from various Pakistani networks as well on your screens right now. हुआ था खारदार तारें लगाकर इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया था और यहीं पर ये ऑपरेशन किया गया है। और यहाँ पर आयशा अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे, खास बात इस घर के हवाले से ये भी है कि यहाँ पर ना टेलीफोन कनेक्शन था, ना ही इंटरनेट का कोई कनेक्शन था, और यहाँ के जो लोग हैं वो घर का जो कूड़ा है वो भी फेंकते नहीं थे, उसको जला देते थे ताकि किसी किस्म का कोई सबूत। बिल्कुल दिशान, हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक हद हो सकती है कि सिक्योरिटी किस तौर पर यकीनी बनाई गई थी, इस घर के मकीनों की प्राइवेसी को किस हद तक मद्देनजर रखा गया था कि कूड़ा करकट, जैसा कि आपने बोला, कि वो भी जलाया जाता था ताकि कोई भी सबूत बाहर जाने नहीं पाए इस घर से। लेकिन रिपोर्ट जो सामने आई उसमें ये बताया गया है कि 6 माह से ये घर निगरानी में था और सैटेलाइट के जरिए इस घर की निगरानी की जा रही थी, और ये बात पता चल चुकी थी अमेरिका को कि यहाँ पर ओसामा बिन लादेन जो है वो रिहाइश पजीर है। एक खास बात इस रिपोर्ट में ये भी सामने आई है कि 4 साल पहले ओसामा का एक साथी जिसको गिरफ्तार किया गया और ग्वांतानामो में उसने ये इंकशाफ किया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के इस इलाके में मौजूद हैं। बिल्कुल, बल्कि कुछ देर पहले ही नहीं बल्कि 2010 में कहा जा रहा है कि ये अमेरिका को ये पता चल चुका था कि यहाँ पर ओसामा बिन लादेन इस तरीके से पाकिस्तान में मौजूद हैं, और बारहा अमेरिका की जानिब से बयानात भी आते रहे हैं कि हम ओसामा के करीब पहुंच रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर बहुत जल्द इस हवाले से कोई कार्रवाई भी की जाएगी। और इस मौके पर इस ऑपरेशन को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। खासतौर पर बराक ओबामा का जो इसकी रेटिंग है उनकी वो गिरती जा रही थी इस ऑपरेशन के बाद, और इसकी कामयाबी के बाद अब बराक ओबामा का जो इमेज है वो बहुत बेहतर। बिल्कुल, हमने देखा दिशान कि जैसे ही ये खिताब किया गया कौम से बराक ओबामा की जानिब से, जैसे ही ये टीवी पर आकर बोला गया कि इस तरीके से कामयाबी हासिल कर ली गई है, ओसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया गया, हमने देखा कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर क्या माहौल था, किस तरीके से लोग बाहर निकले और जश्न मनाया गया ओसामा की हलाकत पर, और किस तरीके से फेवर में थे वो लोग अपने सदर की। खासतौर पर इनमें वो लोग भी बहुत बड़ी तादाद में शामिल थे जिनके प्यारे किसी न किसी शक्ल में इस 9/11 के हादसे से मुतासिर हुए।
ان کے لوگ، ان کے پیارے ان بلڈنگز میں، ٹوین ٹاورز جو ہیں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر وہاں موجود تھے، یا بالواسطہ بلا واسطہ جسی بھی طرح سے متاثر ہوئے وہ لوگ بڑی تعداد میں جشن منانے والوں میں شامل تھے۔